Assalamu alaikum. I've just announced on Facebook that I will take today's class in two parts, 4 to 4:50, then 5:10 to 6. I hope it's all right for you people. Any problem of having two sessions with a break of 20 minutes? No, sir. Thank you. So, after the revision of calculus or a preview of real analysis, we now today begin a discussion on real analysis, and the first chapter that I will be sharing with you is about real numbers and its characteristic properties. Let me begin with the definition of function again. And just to recall you that we will be using these terms too often. Function that assigns a unique value for every element of the first set, a unique value in the second set. The first set is domain, the second set is codomain. The second set is called the range of the function. If every element in the second set is an image of some x in the first set, then this function is onto function. And we have a one-one function whenever different elements have different images. You people are familiar with these terms. If a function is both one-one and onto, you can define an inverse of a function. Hope you are also familiar with this idea. And if I consider a subset of the first set, A1, and consider the set of images of all elements of A1, I call this FA1. That means all set of all values of the function for elements of A1. So such type of function is then this new function is called restriction of the original function, and the original function is the extension of this restricted function. I repeat, we have a subset of a set A, and we have a function defined from A to B. ये नहीं मतलब तुम तीन sentences लिखो सिर्फ. Ramsha, it's you. Okay, we have a function f defined from A into B, and A1 is a subset of this domain. Every element in A1, if I take the images of elements in A1, I call this the set FA1, and the function now which maps the elements from A1 to the set B is called the restriction of the original function f, and the original function f is called the extension of function p. I hope you remember that composition of function can be defined under what condition. We can define f of g in the sense of f of g of x only if the range of values of g
range of values of G has something in common with the domain of F, or at least it should be a subset of domain of F. Similarly, GOF, that is G of f of x, can be defined only when the range of inner function f is a subset of the domain of the outer function. If fog and GOF are both equal, we say that fog and GOF define an identity function, which we denote as Ix is equal to x. They denote and define as this. And in that case, G is an inverse of f and vice versa. There are some notations that are used for discussion on functions. Each of these statements is, in fact, a theorem. When we define function, we say that it's a relation between two non-empty sets. लेकिन अभी हमने चूंकि बात की है restriction की, so A1 is any subset of A जिस पे के function define किया जा रहा है. अगर हम subset null subset ले लें तो फिर उसकी image set भी null आएगा. Generally, the set of images of every element in A is a subset of B, but if it is equal to B, then the function is on to. Now, if we have A1 subset of A2, then the restriction will be having similar relation. That means restriction defined on A1 should be a subset of the restriction defined on A2. If you take a number of subsets of the first set A, this is union of all those subsets. अगर मैं उसको मैप करूं तो that will be same as अगर मैं हर सबसेट की पहले इमेज सेट बनाऊं और फिर उनका यूनियन लूं. Whereas in intersection case, it will be only subset. That means intersection of all subsets of A intersection of all subsets of A की image लूं, so that will be the intersection of the subset of the intersection of all the restriction on the function f. If you can take the image of inverse image of null set, it will be null, whereas inverse of the whole set B will be A, and that is in case of onto function. Similar notations are defined in the next two. B complement, that means whenever we say we are talking about complements, then we are talking about universes as well. So set A and set B, they have their own universes. So if I consider B complement, तो उसका inverse जो होगा, that will be the complement of the inverse of the set B. Sometime, somewhere, if we use these notations, we'll consider further detail. Two sets, remember, they are equivalent if they have one-to-one correspondence between one. That means for every element of the first set, there is an element in the second, and vice versa. One can also say that two sets can be equivalent if they have the same number of elements. That means order of the two sets is same. Set of real numbers. Our discussion today is to explore fundamental properties of the set of real numbers. Calculus at the elementary level जब हम पढ़ाते हैं तो numbers introduce करते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं कि जी natural numbers क्या होते हैं, क्यों चाहिए होते हैं, तो हम कहते हैं गिनती के लिए चाहिए होते हैं. 1 2 3 4 up to infinity form the set of natural numbers. फिर वहाँ से हम integers की बात करते हैं, primes की बात करते हैं, even, odd, and then we define rationals and irrationals. And you must remember this kind of a definition that I use with slightly different words. Here, a set of rational numbers has elements of the type p upon q.
where P and Q are integers with no common factor. इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल की जाती है कि P and Q are relatively prime. Whether I say P and Q are relatively prime or I say P and Q have no common factor, so no common factor except one. That will be the replacement of the term P and Q are relatively prime. And definitely Q should not be zero. Whereas irrational numbers are generally written in books as numbers that are not representable as P upon Q. Although this is simply means X is not equal to P upon Q. क्या P upon Q क्या है? P upon Q की वही definition लगती है. In generally we say that जो rationals नहीं है वो irrationals हैं, लेकिन we should remember the basic difference between rationals and irrationals, and that is written in these two sentences. When a rational number is represented into its decimal form, the form either terminates after a finite number of digits, or if it does not terminate, then it has a recurring pattern of digits. Whereas if you're talking about irrational numbers, when they are represented in decimal form, they are either a terminating type, they are neither terminating type, nor they have a recurring pattern. So let me, I wanted to show you this on the Excel sheet, but I did not find the Excel property where I can increase the decimal representation to 30 digits. So yeah, 16 digits is are the neither. So if I write down root 2, it will have no recurring pattern, but just 16 decimal places are not sufficient to state that there is no recurring decimal. मैं आमतौर पे फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज करवाया करता हूँ कि एक स्क्वायर रूट एल्गोरिथम होता है, जरा वो स्क्वायर रूट एल्गोरिथम इस्तेमाल करके रूट 2 की वैल्यू निकालो 25-30 डेसिमल प्लेसेस तक. तो करते भी हैं बच्चे जिनमें थोड़ा सब्र होता है, जिनमें मैथमेटिक्स की थोड़ा सा होता है बग, वो करते हैं, and they find out that there is no recurring pattern. Whereas any rational number, and you will have a repeating terminating pattern or a repeating pattern. Let me write down, for example, 7 upon 11 is equal to 7 upon 11. Why are you doing this? Actually, कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं आती. सर ऊपर से टाइप जनरल करता है, कस्टम अभी देता हूँ. 7 upon 13 करता हूँ, देखते हैं क्या करता है. या 7 upon 17 is equal to 7 upon 17. उसको भी इसे जनवरी 0 कर दिया. Okay, I change the format of the cell. It has to be a number, and it has to be as many decimal places as. So 7 upon 17. Now you will see an interesting thing. 3 and 3, 6 and 3, 9, 12. Precision is 16 digits tak hai, and I have divided it by 17. That is a problem. If instead of 17, I consider this as 13, and now look at the pattern. 5, 3, 8 से शुरू होके 5, 3, 8. So कितने digits का pattern है? 3 और 3 6 और 3 9, 3 12. 13 से divide किया, 12 digits का pattern आया. So if I divide it by 23, I don't see a pattern terminating, pattern recurring, because in this the pattern will be of at least 22 digits. So that is not कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखवाया था जिसके जरिए
रिजल्ट जो है वो जितने डेसिमल बेसिस तक हासिल करना है हासिल कर सकते हैं. They made a program and they got the result 500 places, 5000 places, 5 lakh places. And that algorithm is a very primitive form of determining whether a given integer is prime or not. Uh, 1 upon a prime number, and it has a property जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं इस नंबर को 1 upon, अगर मैं 23 is a prime number, तो इसमें recurring pattern उतने digit का होगा, n अगर prime number है तो n minus 1 digits का होगा. So this is one of the a very elementary algorithm that determines whether a given number is prime or not. Otherwise, finding out large prime numbers is a very complicated issue, and there are teams of mathematicians and computer scientists that get together in institutes of strategic importance. For example, in America, such a team is working in Pentagon to find the largest prime number. और जैसे उनको largest prime number मिलता है उसके बाद वो लग जाते हैं उससे अगला prime number मालूम करने के लिए. So what's the use of finding out all these prime numbers? Data encryption. जैसे एक नया प्राइम नंबर मिलता है सारा डेटा जो है एनक्रिप्ट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्राइम नंबर. एनीवेज डिस्कशन कहीं और चली जा रही है और ऐसा होता रहता है मेरे साथ, लेकिन it is just to motivate that what is the significance of learning pure mathematics. उस टीम में pure mathematicians जो हैं they are at the top and computer scientists work under their directions. What algorithm they have to use in order to get whatever result they want. Now we use the term structure. It's very commonly in algebra as well as in analysis. When I say algebra, that means abstract algebra. When I say analysis, that means real analysis or general real and complex analysis at any advanced level. Structure in its simplest form is a set with some operations defined in it. So we say that the set of real numbers has a structure because you can add real numbers to get other real numbers, you can multiply real numbers to get other real numbers, and this term here, structure, a set of real numbers is structured. इस सेंस में इस्तेमाल हुआ है. Then you know that a set of real numbers is a field, and I've listed all the field properties here, starting with closure property, starting with commutative property. Algebra पढ़ते हुए पहले आप closure property पढ़ते हैं, फिर associative property पढ़ते हैं, so on and so forth. But here, first I've written commutative properties for both addition and multiplication, then associative property, then the existence of identity with respect to addition and identity with respect to multiplication. ये फील्ड प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आपने कहीं पहले पढ़ ली होंगी, और अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स कर चुके हो तो फील्ड को तुम पढ़ चुके होगे. कर चुके हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कोर्स या कुछ लोग? अभी इस वक्त कोई नहीं कर रहा सर, हमारे इसमें है ही नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग डिग्रेडेड बीएस हो गए हो. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं है तब तो मुझे उस सारी चीजें डिस्क्राइब करनी चाहिए थी फॉर योर नॉलेज. इफ एनी ऑफ यू गो फॉर एन एमएस डिग्री तो वहाँ पे अगर बाहर जाओगे तो लोग समझेंगे कि तुम पढ़ के आए हो ये सब कुछ. अगर यहीं आईबीएम में करोगे तो संभाल लेंगे लोग खुद ही. Now, first property is the structure.
Yeah, a set of real numbers is structure, and second property is field. So set of real numbers is a structured field with all these properties available. Last one is the distributive law. The left is distributive and the right distributive law. And then comes order property. Before I go to order property, uh, just let me tell you that कोई भी एक set जो है हमने कहा उसमें उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं या स्ट्रक्चर्ड कहते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस हो जिनसे कि हम we can combine the elements of the set to make other elements of the set. तो यहाँ तो हमने सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात की है. There are many other kind of binary operations like union and intersection, like clock arithmetic. इस वक्त अगर 4 बज रहे हैं तो ये बताइए कि 10 घंटे के बाद क्या टाइम होगा. If it is 4 p.m. right now, what will be the time after 10 hours? 2 a.m. 2 a.m. So what you have just done is 4 plus 10 is equal to 2. ऐसे ही है ना? Sir, mod 12 की Mod 12. So you have that idea of mod. So under modulus arithmetic of both addition as well as multiplication, we can have fields, and the smallest field is the Boolean field that contains only 2 elements, 0 and 1, where operations are logical and logical or. तो दो ऑपरेशंस हों और ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हों तो हम कहते हैं कि फील्ड है. सेट ऑफ रियल नंबर्स फील्ड है, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी फील्ड है. सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि जो आइडेंटिटीज हैं 0 and 1 ये रैशनल में है, इरेशनल में नहीं है. So similarly, you talk about natural numbers, and all these properties are not available because additive inverses are not there in the set of natural numbers. आप extend कर दो, integers का set ले लो, so you will have these additive inverses available, but not the multiplicative inverse. किसी भी integer का multiplicative inverse आपके पास set of integers में नहीं है, बाहर कहीं होगा. So it has to be within the set. So these properties of closure, these are closure properties with respect to addition. तो ये closure properties जो हैं ये तो तुम्हें मिलेंगी उसमें natural numbers में भी, लेकिन बाकी property. So a set with one operation and some properties, we have different algebraic structures जिसमें semi group होता है, group होता है, abelian group होता है. ये term सुनी है तुम लोगों ने? Semi group, group and abelian group. No, sir. वाकई नहीं सुनी? अरे यार ये तो बड़ी याद. abstract sir. एब्स्ट्रैक्ट आपके आने वाले सेमेस्टर्स में भी नहीं है? नहीं सर, तलवार है ही नहीं यार, ये गड़बड़ हो गई. खैर, जुनैद के होते हुए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा गायब कर दिया. एक तो होगा यार, एक अलजेब्रा का कोर्स होना चाहिए. एनीवेज, मुझे क्या तकलीफ हो रही है भाई? मुझे सिर्फ ये बेटा, लीनियर अलजेब्रा जो है उसको मैं बच्चा अलजेब्रा कहता हूँ. हालांकि लीनियर अलजेब्रा जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, आपके डॉक्टर रजी पढ़ाते हैं या अपने डॉक्टर जुनैद पढ़ाते हैं, तो ये लोग जो है पानी दे दो. जुनैद और रजी वाला जब पढ़ाते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं. I don't know whether they expose you to the idea of these structures. लेकिन मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ तो मैं ये बता के शुरू करता हूँ काम कि भाई इस अलजेब्रा के दो मेजर पार्ट्स हैं, लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा. लीनियर अलजेब्रा जो है उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस से कम नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बूलियन फील्ड का जिक्र किया.
Boole ने बुनियाद अलजबरा दिया था in the decade of 1850s or 1930s तक. It was just a field of pure mathematics and nobody knew a practical use of that. And then a student at MIT who had done a BS in mathematics as well as BS in electrical engineering. And he was working on MS thesis for electrical engineering, where he was exposed to a problem of switching circuits, जिसमें वो ऐसा फंसा कि उसको कोई solution नहीं मिल रहा था. And suddenly he recalled कि उसने कहीं बुनी अलजेब्रा पढ़ा था, or perhaps that will be helpful. तो फौरन भागा लाइब्रेरी गया, बुनी अलजेब्रा की किताब निकाली, and then he start thinking about how to solve his problem. And within a few weeks, he was able to solve the problem and got MS. And within 5 to 10 years, computers, the way we know them now, were actually made. And in the Second World War, Germans used computers to calculate trajectories of rockets taking explosives from Germany direct to London. And London की उन्होंने एक saint बजा दी. So that was that was built on pure mathematics, which solved problem of switching circuits, which ultimately made it possible to develop the modern computer, and that computer was used to calculate trajectory. अब आप लोगों ने मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ी भी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, शायद आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अपने ओ लेवल या इंटर की फिजिक्स में पढ़ा हो. प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी रॉकेट या मिसाइल जो है उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका रास्ता जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, पैराबोलिक होता है. लेकिन कैलकुलेटिंग ए ट्रेजेक्ट्री यूजिंग ऑल पैरामीटर्स इन्वॉल्व जो अवेलेबल थे, द डायरेक्शन ऑफ एयर, the speed of air along the path of the rocket that will fly from Germany and has to land on London. It was an extraordinary exercise of that time. Now it is just बच्चों का खेल है. हम और आप मुहावरे में जब ये कहते हैं ना, अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये मुहावरा इस्तेमाल करने वालों को भी नहीं पता होता कि रॉकेट साइंस है क्या. And that all is built up on pure mathematical knowledge. Anyways, the next property that I'll discuss for real numbers is ordered field. Set of real numbers form an ordered field. Now, what is order property? We know that if you select any two real numbers, out of three, there will be exactly one of the statement true. Either the two numbers will be equal, or one will be smaller, or the other will be smaller. We call it law of trichotomy. तो कोई भी दो रियल नंबर ले लीजिए, इन तीन में से सिर्फ एक चीज, and that is the basic property of order. हर सेट में नहीं होता. हाँ, जिन नंबर्स की अभी तक हमने बात की उन सब में है. The second part of order property is that you can see three numbers. You choose three real numbers. If x is greater than y and y is greater than z. I hope you are familiar with this notation. Yes, sir. And logical and, ठीक है. तो ये दोनों अगर true हैं, यानी x is greater than y and y greater than z, then x must be greater than z. This is the transitive law of transitivity. Then choosing three real numbers, if x is greater than y, you add the third number z to both sides. The inequality will not change. This is compatibility of order with addition. Whereas compatibility of order with respect to multiplication requires one more condition कि तीन नंबर हैं आपके पास,
x greater than y है, z is a positive number. इधर z के पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं थी. x ग्रेटर देन y, दोनों तरफ एक रियल नंबर ऐड कर दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. ये रियल नंबर z जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन व्हेन यू मल्टीप्लाई एन इनइक्वालिटी, आई होप यू रिमेंबर दैट मल्टीप्लाइंग एन इनइक्वालिटी बाय positive number keeps the inequality as it is, and if you multiply the inequality with negative real number, then this direction of inequality, the mouth of the alligator, uh, changes its direction. So compatibility of order with multiplication. If these four properties are satisfied by elements, I mean, of any set, we say that that set of numbers or ideas or whatever has an order. Uh, in next semester, you'll be studying complex analysis, and you'll find out that set of complex numbers is not ordered. Because set of complex numbers, in fact, are representing points on a plane. So if I talk about points on a plane and develop some kind of algebra and analysis over a set of ordered pairs, I'll not be able to find out this kind of order. A point in first quadrant and a point in third quadrant, उनमें ये इस किस्म का order less than or greater than define नहीं किया सकता. हाँ, the distance of the point from origin, and then it becomes a real number. And in real numbers, you have order. So these are four properties which a set satisfies under addition and multiplication, which the set of real number does. In the first two properties, operation is not required. It's only the inequality. In these two compatibility properties, the addition and multiplications are used. ये चारों properties अगर satisfy होती हैं तो हम फिर कहते हैं कि set is ordered. So set of a real number is not only structured, like we stated here. कहाँ किया था भाई? नीचे सर. Yeah. Structure in the sense कि set of real numbers में आपके पास operations है addition and multiplication, जिसकी वजह से आप अलजेब्रा कर सकते हैं. सो अलजेब्रा की स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर भी कहते हैं. हम कह रहे हैं कि field of real numbers is structured. Not only structured, it is ordered as well. So the field of real numbers is structured, and it is a complete ordered field. Now, I have not yet defined completeness. I have defined structure, I have defined order, I have defined field, but completeness is yet to be defined. This completeness property of real numbers shall be discussed after discussion on natural numbers. So we have this fact about real numbers के उसमें structure भी है, उसमें order भी है, वो field भी है, उसमें completeness भी है. ये सारे अल्फाज जो हैं ultimately leads to what? Look at the properties of the field. अगर ये सारी properties available ना हो तो बचपन से तुम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है, चाहे अलजेब्रा के नाम से मैथमेटिक्स पढ़ा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से मैथमेटिक्स पढ़ा है, चाहे मैट्रिसेस के नाम से पढ़ा है, अगर ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल ना हो तो तुम कोई अलजेब्रा, कोई ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल सॉल्विंग एन इक्वेशन, तो तुम चीज़ों को उठा के इधर इधर से उधर लाते हो, तो कैंसिलेशन लॉज अवेलेबल हैं क्योंकि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस अवेलेबल हैं कि नंबर्स को इधर से उधर ले आते हो. So if inverses are not available, you cannot even solve a simple equation 2x plus 3 is equal to 0. You know that the result is x is equal to minus 3 by 2. लेकिन minus 3 कहाँ से आया? The negative or the additive inverse was available. That is why you took it to the right hand side. In fact, you added minus 3 on both sides. So let me try one new thing.
that I just obtained. Right. Can you see the whiteboard? Yes. Yes, sir. So I was talking about, हाँ जैसी मैंने उस पे पेन रखा गायब हो गया. तजर्बा कर रहा था और तजर्बा लग रहा है मुझे नाकाम हो रहा है. नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? ये रखा पेन, आ गया आ गया. मैं बात कर रहा था 2x + 3 = 0. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो? 2x + 3 and you have to put brackets here. This is one number plus -3 and then 0 plus -3. Now 0 is your additive identity. The minus right side will become -3. Here you will have to use associative property to rearrange. To rearrange to get what? To rearrange to get 2x + 3 bracket -3. So if this associative property is not available, you can't work. It's the simplest problem in algebra. So coming back to this, it was just to demonstrate that how important all these properties are. We can't do anything without this. So set of real numbers is a structured, ordered, and complete field. जिसकी वजह से जितना मैथमेटिक्स आप अब तक करते चले आ रहे हैं वो सब कर पाते हैं. और in most of the practical problems हम real numbers ही deal कर रहे होते हैं. Yes, in some of the areas like electromagnetism and fluid dynamics, we have uh, problems that involve complex numbers also. Complex field is used there to solve those problems. But most of the practical problems are solved on the basis of use of real numbers. तो मैंने कहा था कि कंप्लीटनेस पर आने से पहले ज़रा नेचुरल नंबर्स पे नज़र डालें और ज़रा अपने आप को थोड़ा सा हैरत ज़दा होने के लिए तैयार हो जाएं. Get ready to be surprised. Piano's postulates. These postulates, in fact, define or describe the properties that set of natural numbers possess. And it is not only the set of natural numbers that possess these properties, there are other sets that also possess these properties. क्या property भाई? पहली property ये है कि one belongs to the set. Now this one for natural numbers is the number one, but it is better to call starting number. So पहली बात, जब one इस set में है तो इसका मतलब है n हमारा non-empty नहीं है. It contains an element called 1. हम roughly कह सकते हैं कि the first element is 1. What's the second property? Second property says that for every natural number or every element in A, there is a unique element and not called the successor of n. So what does it mean? सबसे पहली बात है कि for every natural number, think of any natural number. I think about 143. Now, can you think of what will be the successor of 143? $144. That's it. So every natural number has a successor. For every natural number, n naught is not equal to 1. यानी 1 को छोड़ दीजिए.
1 is not a successor of any element. Every element has a successor. Every element is a successor of some natural number, लेकिन 1 किसी का सक्सेसर नहीं है. सो हमने एन नॉट नोटेशन जो इस्तेमाल की है वो सक्सेसर के लिए की है. सक्सेसर कैन नॉट बी 1. इट्स अ स्टार्टिंग नंबर. इससे पहले कोई नहीं है, ये किसी के बाद नहीं आता. एंड इफ यू हैव टू डिफरेंट natural numbers, then their successor should also be different. Distinct elements have distinct successor. 11 and 27 are different numbers, हाँ. तो 11 और 27 का सक्सेसर सेम नहीं हो सकता. 11 का 12, 27 का 28. So distinct natural numbers have distinct successors. And the very interesting property, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई सबसेट ले लूं ए, और इस सबसेट की प्रॉपर्टी क्या हो कि इस सबसेट में 1 शामिल हो. उसके अलावा इस सबसेट की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई नंबर पी सेट में ए में है और उसका दैट इम्प्लाइज कि उसका सक्सेसर भी ए में है, तो फिर सेट ए जो है वो इक्विवेलेंट टू सेट एन हो जाएगा. सर ये बात वापस समझा दें. यही असल, इससे पहले की बात तो सिर्फ सक्सेसर डिफाइन करने वाली बात थी. यानी 2 बातें, पहली 4 प्रॉपर्टीज की खास हैं. एक, स्टार्टिंग नंबर होगा जो किसी का सक्सेसर नहीं होगा, जिसके पीछे कोई नहीं आ रहा, जो भी है इसके आगे आ रहा है. हर एलिमेंट का सक्सेसर होगा, 1 का भी सक्सेसर होगा. दूसरी अहम बात यह कि अगर नंबर्स डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनके सक्सेसर भी डिफरेंट होंगे. लेकिन आखिरी बात जो है ये असल में ये बहुत ही मजे की बात है. थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अंडरलाइन भी कर दूं. हाँ, ओ मैंने एक सबसेट लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का. उस सबसेट में 1 भी है. उस सबसेट के हर एलिमेंट का सक्सेसर भी उस सबसेट में है. आई रिपीट दिस. एक सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का. इस सबसेट के अंदर एलिमेंट 1 है और इस सबसेट के हर एलिमेंट का सक्सेसर भी इस सबसेट में है. देन ये जो सेट ए है ना, दैट इज इक्वल टू सेट एन. सेट ए कोई डिफरेंट सेट नहीं है, वही नेचुरल नंबर्स का सेट है. तो वही हो गया ना, अगर आगे वाला नंबर लेंगे तो उसका भी सक्सेसर हो जाएगा, उसके आगे वाला लेंगे तो उसका सक्सेसर हो जाएगा, वो एन तक जाएगा. मगर ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है ये दरहकीकत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की बुनियाद है. +1 वाली सर. So I mentioned here that these postulates formulate the theory of natural numbers and the principle of mathematical induction. So हमने इस प्रिंसिपल की लैंग्वेज डेवलप करने के लिए ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस की. ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पास नेचुरली मौजूद हैं. तो भाई नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं. कोई नेचुरल नंबर सोचिए 525, तो उसका अगला 526 है. ये हमें पता है. हम उसको फॉर्मल लैंग्वेज दे रहे हैं, हम टर्मिनोलॉजीज डिफाइन कर रहे हैं, हम नॉमेनक्लेचर डेवलप कर रहे हैं. जब तक हम कॉन्सेप्ट्स के साथ नॉमेनक्लेचर या नाम एसोसिएट नहीं करते, उस वक्त तक हम बात को एडवांस लेवल, मोर एंड मोर एडवांस लेवल पे कहने के काबिल नहीं होते. So if a subset of the set of natural number contains the first element 1 and every element of that set, every element that is in the set, उसका successor भी उस set के अंदर है, तो फिर set A में और set N में कोई फर्क नहीं है. They are equivalent set. The last of the postulate is the basic form of the principle of mathematical induction. क्यों कैसे ये सब मैंने डिस्कशन छोड़ दी है, लेकिन मैंने ये जो एक किताब आपसे शेयर की है
ट्रेंच की रियल एनालिसिस फेसबुक पे है, मैंने अपलोड की थी कल। ये जितने भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ये सब उसके अंदर हैं, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें हैं, और उसकी एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत ही मजेदार किस्म की एक्सरसाइज है। मैंने भी पूरी एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं की उसकी अभी तक। तो I'll give you some selection of exercises, but here let us concentrate immediately on the properties of the set of natural numbers and see whether all these sets written here have that property or not. ये तो natural numbers का set है, इसमें तो वो properties हैं, starting element 1 and then 2, 3, 4, 5, 6. A successor of every natural number is present. कहाँ तक? Unending. But what about this set? -11, then -7, then -3, then 1, 5, 9, so on. आप इस तरह की लिस्ट को किस किस्म की सीक्वेंस कहते हैं? Arithmetic. Arithmetic. With first term -11, common difference 4. General term 4n -15. ठीक है? क्या इसमें आपके पास पहला एलिमेंट कोई है? Yes, you have. This is S1. क्या हर एलिमेंट का सक्सेसर है? Yes. -11 का -7 है, -7 का -3 है, उसका बाद 1 है। इसमें से कोई दो डिस्टिंक्ट नंबर्स ले लो, उनके सक्सेसर्स डिस्टिंक्ट है कि नहीं है? -7 का सक्सेसर -3 है और 9 का सक्सेसर 13 है, तो है। और अब मुझे बताओ कि ये सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट है कि नहीं? नहीं सर। इसलिए नहीं कि तुम ये सोच रहे हो कि 1 जो है इस सेट में नहीं है। भाई यहाँ पे 1 जब मैंने पहली दफा कहा था, 1 का मतलब नंबर 1 नहीं है बेसिकली पियानोस पोस्टुलेट में। इसका मतलब है पहला एलिमेंट। In my common language, it is first element. And whatever that first element may be, it may be 1, it may be -11, it may be 6, or 2 to the power 0. So you have to have a first element. तो जहां जब पांचवी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो ये जो 1 है ये एक पहला एलिमेंट है ए में, और उसके बाद हर एलिमेंट का सक्सेसर मौजूद है। दैट मेक्स सेट ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जी ये वाली चीज समझ में नहीं आई जो आपने कहा कि ये नेचुरल नंबर्स का सबसेट है या नहीं है, वो वाली लास्ट वाली चीज जो आप बता रहे हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ना, नहीं सर, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, फिर आपने नीचे एग्जांपल्स एग्जाम्पल। हाँ देखो भाई, हमने इन 5 प्रॉपर्टीज से जो लेसन हासिल किया वो क्या है? नेचुरल नंबर्स के सेट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें एक पहला नंबर है, नेचुरल नंबर्स के सेट में उसको 1 कहते हैं, और फिर हर एलिमेंट का सक्सेसर है। नेचुरल नंबर्स में वो सक्सेसर 1 के डिफरेंस से आ रहा है, और किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेट के सक्सेसर जो है वो डिफरेंट होंगे। पांचवी प्रॉपर्टी को फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ, और ये पहली 4 प्रॉपर्टीज पर इन एग्जांपल्स पे गौर करो। ओके, कम टू दिस एग्जांपल। व्हाट्स द फर्स्ट एलिमेंट? इस सेट वाई में पहला एलिमेंट क्या है? 6। 6 किसी का सक्सेसर है? नो। 6 के बाद क्या है? 11। उसके बाद 16, 16 का सक्सेसर 21, 21 का सक्सेसर 26, एंड इट इज अनदर अरिथमेटिक सीक्वेंस जिसका जनरल फॉर्मूला 5n+1 है। ठीक है, तो इस सेट में पहला एलिमेंट है, इस सेट में सक्सेसर्स हैं। सक्सेसर्स किस हिसाब से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर्स में एक एक के डिफरेंस से आ रहे हैं, मगर यहाँ 5 के डिफरेंस से आ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में कितने एलिमेंट्स हैं?
Infinite. Infinite. सेट y में कितने एलिमेंट्स हैं? Infinite. Infinite. For each element in the set n, there is a corresponding element in the set y, Yes. and vice versa. Yes. So they are equivalent. They have one correspondence. Same is the case with this last example, which is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 powers. So you can see that correspondence again. हालांकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, सीक्वेंस है, लेकिन इसकी भी वही प्रॉपर्टी है, पहला एलिमेंट एक है इसका, उसके बाद सक्सेसर डिफाइन करने का एक रूल है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के सक्सेसर डिफरेंट हैं, so on and so forth. I terminate this first part of the lecture at this stage, and we'll meet in 15 to 20 minutes. So I'll stop recording. I'll सर why? यार 20 मिनट का ब्रेक करना है मुझे. सर नमाज का टाइम है 5:15 पे, तो वहां ले लेना ब्रेक. अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, 5:10 पे कर लेंगे ब्रेक, मगर उसके बाद फिर मेरे पास 30 मिनट. ओके ठीक है, सही है, कोई बात. So in fact, in this way, any infinite sequence has these properties. It has a first element. Every element has successor. First element has no successor. Distinct elements of an infinite sequence have distinct successors. And every infinite sequence is equivalent to the set of natural numbers. तो हमने अपना दिमाग को खोलने की कोशिश की है कि नेचुरल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, written as Peano's postulates, they are not simply possessed by the set of natural numbers. There are many other sets that you can. The starting number, which is not successor of any other number in the set, जरूरी नहीं है कि 1 हो. इसमें स्टार्टिंग जो है वो -11 है, इसमें स्टार्टिंग 6 है, जो कि किसी के सक्सेसर नहीं है. हाँ, इनके बाद हर एलिमेंट का सक्सेसर है. तो वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी भी इन्फिनिट सीक्वेंस में, which is of course developed on the basis of a well defined formula. Arbitrary infinite sequence बना दो तो उसके अंदर भी अगर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं तो you can assign ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. जैसे ही तुमने ये काम करना शुरू किया, कॉरेस्पॉन्डेंस डेवलप होना शुरू हो गई, और जैसे ही वन कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश हुई, the given set is equivalent to a set of natural numbers, although Peano's postulate may not be satisfied. Anyways, that is not a big deal. We note here that the set of natural numbers has an algebraic structure with order, but it is not a field. Field इसलिए नहीं है कि additive inverses नहीं है. Even the set of integers has an algebraic structure as well as an order. However, it is also not a field because multiplicative inverses नहीं है. Both set of rational numbers and irrational numbers have algebraic structure. They are both ordered. Order property satisfy होती हैं. Set of natural irrational numbers is not a field. क्यों नहीं है field? ये मैं पहले बता चुका. 0 and 1, additive identity and multiplicative identity, ये नहीं है set of irrational numbers. 0 और 1 जो है irrational numbers है, जिसकी वजह से ये field नहीं है. कौन? Set of irrational numbers. Yes, set of rational numbers field है, उसमें सारी properties मौजूद हैं field की. So now we focus on completeness property. हमने इसका जिक्र पहले कर दिया था, but to explore completeness property हमें पहले थोड़ा सा rationals irrationals को explore करना है, कुछ थोड़ी सी चीजें और develop करनी है. उसके बाद for example हमें इस तरह की चीजें जो शायद आपने पहले भी देखी हो, कि आपसे कहा जा रहा है यार जरा प्रूफ करो कि √2 जो है वो रैशनल नहीं है. इसका एक सिंपल प्रूफ जो है हर एलिमेंट्री कैलकुलस की किताब में होता है.
और शुरू वो ऐसे ही होता है कि if you want to prove that root 2 is not rational, on contrary we assume करते हैं कि root 2 जो है वो rational number है, इसका मतलब root 2 can be represented as p upon q, where p and q are integers relatively prime having no common factor. जरा इस इक्वेशन को स्क्वायर करें और इसमें से लिखें. I call it equation A. Now q is an integer. q square भी integer होगा, मगर q square into 2 will become an even integer. किसी भी इंटीजर को चाहे वो इवन हो या ऑड हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वो इवन इंटीजर बन गया. जब 2 क्यू स्क्वायर इवन इंटीजर है तो इसका मतलब पी स्क्वायर भी इवन इंटीजर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं. पी स्क्वायर अगर इवन इंटीजर है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो भी इवन होगा. कैन यू थिंक ऑफ इवन नंबर्स, even number whose square root is not even? Square root of 4, square root of 16, square root of 64. So if p square is even, then p has to be an even integer. ये मेरा result p आ गया. Now if p is an even integer, so p must be 2 times some integer. Even integer क्या है? 2 के multiples, where m is any integer. So what will be p square? P square will be 4m square. Now out of 4m square, okay, I compare p square with 2q square, and 4m square is equal to 2q square. जिससे a को इस्तेमाल किया हमने, we conclude that q square is equal to 2m square. 2m square is an even integer. That means q square is even. If q square is even, hence q is even. B conclusion था कि p is even, और C conclusion आ रहा है कि q is even. Now p upon q both cannot be even because हमारी rational numbers में p and q relatively prime होते हैं. So that is a contradiction. B and C lead to contradiction, and hence root 2 cannot be a rational number. This is one proof. There are other proofs of similar thing. For example, root 8 जो है ये rational नहीं है, इसको prove करने के लिए थोड़ा सा हमने कुछ और किया है. Okay, I leave this example for your own exploration and try to understand the logic used in this to prove that root. तो एक काम बहुत आसान था कि रूट 8 को मैं लिखता 2 रूट 2, कहता रूट 2 रैशनल, हम अभी साबित किया कि रैशनल नहीं है, तो 2 into 2 रूट 2. तो फिर मुझे ये साबित करना पड़ता कि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो इरैशनल. लिहाजा रूट 8 इरैशनल नहीं है को प्रूव करने के लिए फिर हमने एक इंडिपेंडेंट अप्रोच इस्तेमाल की. Should I discuss this alternate logic or you will try explore yourself? देखो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस. एक प्रूफ मैंने तुम्हें समझाया, दूसरे प्रूफ को कि ऑन कॉन्ट्ररी आप अज्यूम कर रहे हैं रूट 8 जो है वो p अपॉन q है, और उसके बाद फिर ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करें कि पता लगे नहीं भाई इसकी वजह से तो ये ऐसी चीज हो रही है जो कि हो ही नहीं सकती. हो क्या रहा है, इससे हम ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि सॉरी p माइनस 2q is a positive integer less than 1. इक्वालिटी क्रिएट की है 2 और 3 के बीच में, उसको p अपॉन q से रिप्लेस करके एक और इनइक्वालिटी बनाई. असल में 2 p माइनस 2q जो है is a positive integer less than q.
सर अरे हमने छोड़ो ना, स्टार्ट ही किया है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, तुम लोग खुद सोचो इसको। अगर तुम्हें कोई गलती नजर आए तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसको आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि आफ्टर द ब्रेक आई विल हैव शॉर्टर टाइम। तो मैं जल्दी जल्दी एक दो अहम चीजें डिस्कस कर लूँ। अहम की क्या क्या चीजें, फंडामेंटल चीजें। यू आर फेमिलियर विद द टर्म इंटरवल। हम रियल नंबर के किसी भी सेट को इंटरवल कहते हैं कि अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट नंबर्स हों तो वो नंबर शामिल करें ना करें all elements between these two numbers, and that make an interval. If you do not include the numbers a and b that make an interval, it's an open interval. Notations जो है वो ये भी इस्तेमाल होती हैं और ये भी इस्तेमाल होती हैं। अगर एंड पॉइंट शामिल हो तो closed interval, and you have this notation used for that. Semi-closed and semi-intervals, semi-open intervals से भी आप लोग familiar हैं. This is something that I will necessarily discuss. Bound and bounded sets, supremum और infimum, ये terminology सुनी है आप लोगों ने? No sir. Yes or no? No sir, ये supremum और infimum नहीं सुना. Least upper bound, greatest lower bound, सुना है सर, सुना है। सुना है? Supremum is an alternate term for least upper bound, and infimum is the alternate term for greatest lower bound. Alternate terms इस्तेमाल करने का एक reason ये भी है. Okay, I'll describe that reason while discussing the definition. Set of real numbers का कोई भी subset ले लीजिए, हम उसको कहते हैं bounded above. If you can find a real number m such that every element of the set S is less than or at most equal to this number m, and then this number is called an upper bound of the set. So we can have many upper bounds of a set because हमारी condition for defining upper bounded above and upper bound is that कि वो number upper bound होगा जो set के हर element से या तो बड़ा हो या बराबर हो. तो जो सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट है वो भी हो सकता है अपर बाउंड, और उससे बड़ा कोई नंबर भी अपर बाउंड हो सकता है. Similarly, we say that subset S is bounded below if you can find a number m such that every element of the set is greater than or equal to this small m, and in that case this small m is called lower bound of the set S. So lower bound of the set can be the smallest element of the set or any number less than that. ये तुम लोग जब तुमने ये टर्म सुनी है इसका मतलब ये बातें तुम जान चुके हो. And I am just repeating them. If there does not exist number small m or capital M, जैसा कि ऊपर define किए गए हैं, then the set is not bounded and we say that it is unbounded. Now, ऊपर हमने क्या define किया है? कि there is a set and every element of the set, in this case, is less than some given number capital M. For example, all the elements of the set are less than say 100. So 100, 101, 102.56, they are all upper bounds on the set. Similarly, if I have a set and every element of the set is greater than 1.5, 1.5 लोअर बाउंड है, 1.5 से कम कोई भी नंबर है वो लोअर बाउंड है. लेकिन अगर मुझे ना लोअर बाउंड मिले ना अपर बाउंड मिले, that means I cannot find a finite number capital M which is an upper bound of the set. I cannot find a small m which is a lower bound of the set. Then the set is not bounded, it's unbounded. So when do we say the set is bounded? यहाँ हमने bounded above define किया, यहाँ हमने bounded below define किया. If a set is both bounded above as well as bounded below, then it is said to be a bounded set. So we can have एक सेट है वो अनबाउंडेड तभी होगा ना जब उसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे.
यस, अनबाउंडेड सेट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दैट हैज टू बी एन इनफिनिट सेट. बाउंडेड सेट जो है दैट नीड नॉट बी इनफिनिट. अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी फाइनाइट, वो तो फाइनाइट होंगे, लेकिन अब बाउंडेड सेट के अंदर क्या है मुझको ये बताइए. मैंने ये इंटरवल लिख दिया, ये क्लोज इंटरवल है, ये बाउंडेड सेट है कि नहीं? बीइंग क्लोज इंटरवल, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? सबसे बड़ा? बाकी एलिमेंट्स क्या है इस सेट के? 2.5, 2.6, 2.7. 2 से लेके 3 तक सारे रियल नंबर्स हैं. तो ये सेट तो बाउंडेड है, बट इज इट फाइनाइट और इनफिनिट सेट? फाइनाइट. Finite. फाइनाइट जब कहते हैं सेट को जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी तादाद एलिमेंट्स की जो है वो फाइनाइट हो. द काउंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, देन सेट इज फाइनाइट. Let me define it in detail. Write down this in detail. This set, in fact, is set of all elements x such that 2 less than x, less than or equal to x, and less than or equal to 3, and x belongs to ये है सेट. ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल तुमने क्या पढ़े हैं? इसी तरह पढ़े हैं ना. This closed interval is defined as a set of all real numbers between 2 and 3. Since it is closed, 2 and 3 are included. What other elements are there? Any real number between 2 and 3. कल तुम्ही लोगों ने बताया था कि किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान रियल नंबर्स की तादाद, रैशनल नंबर्स की तादाद, इरेशनल नंबर्स की तादाद इनफिनिट होती है. When the number of elements in the set is infinite, how can this set be finite? And this very term that is being introduced here, bounded set, is to distinguish a set from finite and infinite. ये दो फाइनाइट नंबर्स के दरमियान फंसे हुए सारे रियल नंबर्स हैं. इट्स अ बाउंडेड सेट. तो तुम्हारे ध्यान में जो तस्वीर फंसा हुआ है फाइनाइटनेस का, उसको तोड़ रहे हैं हम. ये बाउंडेड है. तुम्हारे ध्यान में जो तस्वीर फाइनाइट का है वो बाउंडेड सेट का है. What are the number of elements in this set? Every real number between 2 and 3. How many real numbers are there between 2 and 3? Infinite. So it's not a finite set, it's an infinite set. Yes, all elements are between two finite numbers, and that's the meaning of bounded set. अगर सारे एक finite number से बड़े हों तो bounded below है, सारे एक finite number से छोटे हैं तो bounded above है, और अगर दो bounded above भी है bounded below भी है, that means you can find two finite numbers such that all elements are between these two. अच्छा जी, ये तो हो गया. If I write this set, हाँ भैया, क्या कहते हैं उसको? ये ओपन इंटरवल है. So what change this should be? Not equal to 2 and 3. तो 2 और 3 को निकाल दिया हमने सेट में से. ये अभी भी बाउंडेड है और अभी भी इनफिनिट है, because it contains all real numbers between 2 and 3. Okay, so let me have a break now, and we gather again in 15 to 20 minutes and build upon these ideas.
with the, I stop it here. And I stop it here. Hope to see you again. I'll stop the recording as well.